Hello friends, in this lecture of 7th standard we are going to learn the poem that is Vagabond. This particular poem was composed by Robert Louis Stevenson. So our Robert Louis Stevenson is very famous for writing the journey poems. Journey means whatever things were there in journey, he was very expertise in writing such things. The message the poet wants to give through this poem is that we have to live life on our terms only. Okay, so whatever life we are living, we should not listen others. We have to live our life on our likes only, on our terms only. Okay, this type of message the poets, that is Robert Louis Stevenson, is going to give us in this particular poem. So let's get some information about the poet Robert Louis Balfour Stevenson, born on November 13, 1850 and died on December 3rd of December 1894, was a Scottish novelist, poet, essayist and a travel writer. Stevenson developed a desire to write early in life. He had no interest in pursuing the family business of lighthouse engineering. He journeyed abroad, usually for health reasons, and these led to some of his early literary works. His most famous works are The Treasure Island, Kidnapped, and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So in this particular part we say that हमें कह सकते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन जो थे तो उन्होंने बहुत बार एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे, पोएट्स थे, एसेस थे, उन्होंने बहुत बार एक ट्रैवल राइटर बोल के कंसिडर उनको किया जाता है. और जब उनकी हेल्थ इशू की वजह से उनको बहुत बार ट्रैवल करना पड़ा था, सो ऑन द सेम रीज़न ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन द ट्रैवल ओनली. सो उनमें से उनके कुछ जो फेमस वर्क्स है वो है ट्रेजर आइलैंड, किडनैप एंड स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकी एंड मिस्टर हाइड. Now in this poem that is of Vagabond, it is about vagabond is a person usually without a permanent home and wanders from place to place, but a vagabond can also be a person who chooses to live his life moving around. He prefers new places and new people and refuses to be bound within the four walls of a secure environment. Read and enjoy this poem which celebrates the freedom of choice of a vagabond life. Let's move to our poem Vagabond. The Vagabond by R.L. Stevenson tells what a wanderer loves. The Vagabond by R.L. Stevenson tells what a wanderer loves life, his life. He is happy with wandering all the time. He doesn't need a house to live. He doesn't need proper food. He doesn't need money. All he wants is a sky above him and an endless road ahead. ये जो वेगाबॉन्ड पर्सन है उसे क्या पसंद है, इनका जो पसंदीदा पोम है उनमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा इंसान है जो हमेशा घूमते रहता है और उसको एक ही बात होनी, उसको जो मज़ा आता है, वो लाइफ जो एंजॉय करता है उसे घूमने में आता है. उसको कुछ भी नहीं होना है, ना तो घर होना है, ना कुछ रहने के लिए, ना ही कुछ उसे खाने के लिए कुछ होना है, ना ही कुछ उसे पैसे होने हैं. बस सिर्फ उसे दो ही चीज़ें होनी है. एक तो छत जो सिर के ऊपर है वो जो छत होगा वो स्काई का होगा, और उसके सामने जो होगी जो हम बोलेंगे कि जो जिनके सामने होगी वो होगी उनका रोड, उनकी होगी पाथ जो उनको दिखाई देगी. दिस ओनली टू इन्फॉर्मेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू लर्न. लेट्स मूव टू दिस स्टैंजा फर्स्ट. Before going to learn stanza first, let's see some important words I took out. It is called word galaxy. What is vagabond? It is a wanderer, a person who wanders everywhere. एक जो person होता है इधर उधर घूमता है उसे wanderer कहते हैं, वही vagabond है. उसके बाद में give to me the life I love. इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी मुझे लाइफ दे दो जो मुझे बहुत पसंद है. Love इसका मतलब है wash मतलब धोना. Let the live go by me इसका मतलब क्या है, give the jolly events of. Next word is there, that is nigh, N-I-G-H. it means near मतलब पास में. Then beside and the byway nigh me. Okay, so in such things हमें और एक वर्ड उसमें आता है bed in the bush with stars to see. इसका मतलब होता है I can sleep in the bushes looking up at the starry sky. Bread I dip in the river.
I do not need jams and ketchup to dip my bread. I can manage it with water. उनका कहना है मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे साथ पास में अगर ब्रेड रहेगा तो ना मुझे केचप चाहिए ना ही मुझे उसके लिए जाम चाहिए, तो कुछ भी होगा तो मैं चलेगा, कुछ भी रहा खाने के लिए तो आई एम ओके विद दैट. ओके, देन there is a life for a man like me, a man like I enjoy such a wondrous lives. Okay, there is a life forever, such a life is endless. So he's telling that yes, I need such type of life which should not end, which should be continued forever. Okay, so let's learn. Give to me the life I love. वो कहते हैं कि एक ऐसी मुझे लाइफ दे दो जो मुझे बहुत पसंद है. Let the live go by me. Let the live go by me. एक ऐसी एक करो कि मुझे क्या करो, वो जो ये है मेरी लाइफ उसे क्या करो मुझे. गिव मी दैट मच ऑफ चांस टू वॉच दैट एंड लिव मी लाइफ एज पर माई वे. गिव द जॉली heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see. Bread I deep in the river. There is a life for a man like me. There is a life forever. सो इनमें वही इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टैंडर्ड में बताते हो कि मुझे ऐसी लाइफ दे दो जो मुझे बहुत पसंद है, जो जाने के लिए मुझे ना ही कुछ होना है, जो मैं जाता हूँ, एंड द बाय वे नाई मी, जो मेरे पास में नज़दीक जो भी होगा मेरे पास में. बेड इन द बुश विद द स्टार्स टू सी, जो सोएंगे भी तो कहाँ सोएंगे. ही इज़ विशिंग दैट ही कैन जस्ट स्लीप इन द बुशेज एंड इवन स्टार्स, वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, तारे देख सकते हैं, ऐसी जगह उन्हें होना है. इवन उनको खाने के लिए अगर कुछ नहीं हुआ, ब्रेड आई डीप इन द रिवर, वो बोलते हैं अगर कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, कैसा भी मुझे कुछ जाम वगैरह नहीं होना है, ना तो केचप जैसा हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेड के साथ में क्या होना है, उनको वो भी नहीं होना है. एक्चुअली ही वॉन्ट्स दैट whatever is there, suppose river is there, so he can dip that bread in water and he can eat. There is a life for a man like me. So वो ये बता रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान को ऐसी मुझे लाइफ बहुत पसंद है, वही मुझे लाइफ क्या करो आप दे दो. There is the life forever. और ऐसी लाइफ नहीं कुछ दिन के लिए, वो चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम उनको वैसी लाइफ होनी है. Let's move to next para. Let the blow fall soon or late. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I seek not, hope not love, nor a friend to know me. All I seek the heaven above and the road below me. Or let autumn fall on me where afield I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger. White as meal the frosty field, warm the fireside heaven. Not to autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask the heaven above and the road below me. So in this poem we can learn that it is a summary in brief. Okay, this will discuss summary afterwards. Just go through it. The poem celebrates the vagabond's love for freedom and his love for outdoors. The vagabond loves the independence and is more than happy to spend his life in the poem open with nature as his home and the stars of roof. He is not interested in material possessions, nor does he seek friends and family. The vagabond is aware of all harsh conditions in autumn and winter, but does not deter him for being out in the open. He knows that at some point of time and will have to face his maker, but till then all he asks is to be out in the open with the sky above him and the road ahead of him. सो ये जो पोम है इसमें यही बताया गया है कि जो एक इंसान है उसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो फ्री रहेगा, उसको खाने के लिए ना कुछ होना है, ना तो सोने के लिए होना है, ना वो इंटरेस्टेड मनी में है, कुछ भी उसको फिजिकल जो ये होता है जो बोलते हैं प्लेजर होता है वो कौन सी भी चीज़ें उसे नहीं होनी है. सो सच टाइप ऑफ पर्सन इज देयर दैट इज कॉल्ड वैगाबॉन्ड. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर पोम. So this is the general meaning of poem. Okay, so as far as connotative meaning, or we say that the deeper level or deeper meaning of poem is concerned, I would like to give you some hints on that. Okay, so as far as deeper meaning of poem is concerned,
that is led in second stanza we can say the theme is like जो second stanza है हमारा poem का वो बता रहा let the blow fall soon or late. So इस particular इसके बारे में बताना चाहते हैं वो कि ये जो life होगी it is full of blow का मतलब यहाँ पे let's move to word galaxy. Okay, that is blow इसका मतलब होता है death, blow fall इसका मतलब होता है कि death happen, face of earth मतलब होता है nature, wealth मतलब जैसा मालूम है हमें money, I seek not मतलब I don't want, उनको नहीं चाहिए ऐसा. Then heaven above उसका मतलब क्या, heaven above जो ऊपर का जो heaven है इसका मतलब क्या है, sky. Okay, so this is the vocabulary for our second stanza. So I hope you will write it. Firstly listen this carefully. I'll share with you some notes on this also, so you have to write down question and answers and all those things about this particular poem, that is Vagabond, which is very interesting poem which we have learned in this lecture. Okay friends, thanks a lot. Wish you a very happy day ahead.